In the last, I will welcome Dr. Rubab Nafees from Karachi. He is an FCPS surgeon working as consultant in CDPWA on an honorary basis. He has special interest in colorectal surgery and surgical oncology. He has published 9 articles and 3 case reports in international journals. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. I'm Dr. Rubab Nafees and I'm going to present my paper, Factors Affecting Delay in Colorectal Cancer, a cross-sectional study from a tertiary care hospital of Karachi, Pakistan. The need of this study was because we were receiving patients at an advanced stage, the late presentation in a tertiary care hospital. The patient was not referred from the general physician on the time. The primary objective of this study was to determine the cause of delay in CRC, and the secondary objective was to evaluate the tumor size and site and stage of the CRC with the presenting symptoms and symptom duration. The colorectal cancer is the second most common cancer in Pakistan, and because of due to the lack of cancer data registry in Pakistan. The patient we receive usually are at Duke stage C, while the rest of the world is receiving these CRC patients at Duke stage A or B, that is much easier to treat, either surgical or neoadjuvant therapy. So we differentiate the patient in 3 types, like the patient who got laid on their own end because of the lack of the knowledge. Either they are thinking that these are familial hemorrhoidal bleeding or something else, or the second one is on the physician delay, that is the diagnostic delay. When the patient reaches a general physician after the onset of symptoms within 3 months, but the physician delayed it for more than a month for the diagnostic investigations like either colonoscopy and CT scan, that is the diagnostic delay. The treatment delay is when the patient is diagnosed on time, but the patient did not receive any neoadjuvant therapy or surgery within 3 months of the diagnosis. This is the treatment delay. Most of the time, the general physician thinks that there's a resemblance of the symptoms of the CRC is either with intestinal TB or IBD, and for the right-sided colonic cancer. While in the left-sided colonic cancer and rectal cancers, they think that these bleedings are because of the hemorrhoid, fistula, and fissure. We also receive the patient. We also receive the patient more from the underprivileged area, those are from the low socioeconomic group, and more than the 2/3 of the patients belong to the low socioeconomic group. And the material and methods. The patient, we receive selected 113 patients who were biopsy-proven colorectal cancer from June 2019 to May 2020. And these patients were selected on the exclusion criteria of age. The exclusion criteria was age less than 15 years and age more than 65 years. And the other exclusion criteria was any other cancer except the colorectal cancer. The patients were admitted in the ward, and 18 points of questionnaire was given to the patient. Especially each question was asked separately from the patient. Either individually asked that the patient got delay on its own side or on the physician side, or the treatment delay was there. The results were, out of these 113 patients, the 65.5% of the patients were male and 35.5% were female. The 82% of the patients out of these 113 patients were presented delayed, either any of the end. And 17% of the patients were only those who presented within 3 months from onset of the symptoms.
The most common cancer we received in the delayed phase, like 82% of the patient. 44% patients were stage 3 at the time of presentation to our ward, and 39%, approximately 39% of the patients were at stage 4. These are some of the charts. As you can see, the most common tumor was rectum. 65.5% of the patients having a rectal cancer, while 18.6% were patients were having a rectosigmoid cancer. The least common site was transverse colon. Out of this, the patient presented 44% was stage 3 and 39% was stage 4. The most common symptom of this 113 patient was bleeding PR, followed by constipation and abdominal pain. The fecal incontinence were not common in the patient except for the rectal cancer. 4.3% of the patients having fecal incontinence at the time of presentation with rectal cancer, while 18.9% with rectosigmoid cancer that was extending up to the rectum also have fecal incontinence. While the perianal pain was only common in rectosigmoid and rectal cancer, that is 9.5%. This study concludes that there is a need of central cancer data registry, especially related to the colorectal cancer, so that we can improve the survival and the treatment of these patients. The demographic study shows that the low socioeconomic group is more involved because of the lack of knowledge. They don't visit any physician even, and at the side of the physician they visit usually also lack of knowledge regarding the CRC symptoms. The fearsome consequences of this diagnostic delay is the presentation is at an aggressive state, so much so that sometimes we are unable to do anything except for the divergent stomas. Regarding the prevalence of these symptoms among CRC patients in our study, the most common symptom was bleeding per rectum, and the light on the staging, if we can say that the 2/3 of our study was falling in the stage 3 and stage 4 cancers. This study revealed that CRC patients in Pakistan are facing delays in the presentation and diagnosis. The reason behind the diagnosis at the advanced stage with a poor prognosis. There are some few recommendations from my side, being a colorectal interest in colorectal surgery. Our healthcare system must launch a CRC screening program and its prevention on a national level to improve the healthcare related with CRC with key factor early diagnosis and management. The social and mainstream media and awareness program at the social level can be used to enhance the cognizance of CRC among the general population. The general physician should be aware of the burden of disease produced by CRC, and seminars should be conducted to teach the general physician for keeping a low threshold when a patient comes to a doctor with suspicious symptoms. Thank you. Rubab, I would want to say something about it gives your presentation gives the impression that the doctors, especially general practitioners, are not aware of the disease. You see, in our society, if you are working in a field, you can observe that most of the patients, they start treating themselves initially. Then they want to go to the Hakims. Yeah. Then they want to go to someone who gives some wazifa. And then they come to the doctor. And I think the contribution of the doctors in making this delay is very less as compared to the awareness in the public and taking the shortcuts. I agreed with your recommendation that in the country level,
we have to create an awareness program. But this awareness program should be on top. Because whenever you are not making the public aware of this problem, you see, public feels shy to share that he is having per-rectal bleeding. Yeah. I have seen hemorrhoids, they keep them for many years. They don't want to take any medical advice. So the awareness is very important, and we should not directly, I think, blame the doctors only. This is the society, and definitely the doctors are the part of the society. They may make this thing more complex. I just want to add something in this. My study also conclude that the delay is on the both sides, on the patient side as well as on the physician side, because almost equal percentage of the patient out of these 113 patients, the patient himself or herself tell that they went to a physician nearby their home or some thing like this, but the physician diagnosed them as something like hemorrhoid or fistula. Even some of the patients were even biopsied. But for the biopsy, we are talking about the high things here. It is very prevailing in the society that when you are taking a biopsy, it will the tumor become aggressive, and the people, majority of the people are unaware of it, that without biopsy we can't do anything. And they blame the biopsy. Sir, please. Okay, thank you very much actually, and especially Dr. Azhar Alam from Lahore, the original work done, and Dr. Hina and our colleague standing here. I just want to share with you a happy news. The good news is that now we are seeing T1 and T2s. There was a time, 2005, we have only one tumor board, general. Now we have site-specific 77 boards per month in our institute. And Professor Haris will vouch me. In Ziauddin also they have, and everywhere. Raza. So what we are now looking at is that what is the solution? Instead of making a list of problems, why don't we solve them? The solution is tumor boards. The more tumor boards we'll do, the more early tumors we will see. And this is the solution, like what you are highlighting a problem. So this is a problem. Now diagnosis is done. Yeah. Now we have to treat. Treatment is MDT tumor board. So our colleague Dr. Raza Syed rightly pointed out the lower GIT MDT tumor board. So this is going to come up from this COLOCON. तो हमें ना मसले का हल निकालना है. तो मैं आपको ये खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब से ट्यूमर बोर्ड्स हमारे यहाँ हो गए, जैसे 2010 से हम संडे ट्यूमर बोर्ड कर रहे हैं, सिटी ट्यूमर बोर्ड जिसको हम कहते हैं, उसके बाद से अब हमने अर्ली डायग्नोसिस देखने शुरू कर दिए हैं और क्योर रेट भी बढ़ता चला जा रहा है. अभी छोटा सा काम ये करना है कि जैसे डॉक्टर अजहर आलम ने प्रेजेंट किया, अब बस इसको डॉक्यूमेंट करके, वो कहते हैं ना पब्लिश और पेरिश. अभी मेरे क्लास फेलो प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन भी कह के गए हैं, डॉक्टर हारिस रशीद भी कह रहे हैं, सब कि जब तक हम पब्लिश नहीं करेंगे ना, हमें ये इनकरेजमेंट ही नहीं मिलेगी. लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव पब्लिश्ड मोर देन 28 manuscripts in peer-reviewed journal, and Pakistan is a country which has published more on MDT tumor board than any single country in the world. So we are proud of it. तो अल्लाह का शुक्र है कि उस पर आप थोड़ा सा पब्लिश करना शुरू करें. तो ये जो 5 पेपर्स हैं, अगर ये एक्सेस कर जाते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो आप नेक्स्ट ईयर कोलोकॉन के अंदर इसको आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा. आप मेरी बात को शेयर करेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, देयर लॉट ऑफ हैप्पी न्यूज़, एंड नाउ वी आर डायग्नोजिंग मोर कैंसर्स अर्ली एंड वी आर ट्रीटिंग देम सक्सेसफुली. ठीक है ना? तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट बेटर देन व्हाट वी वर 10 years ago. And thanks to City Tumor Board Sunday morning when people come and sacrifice their Sunday and come and discuss. बढ़ता जा रहा है टाइम भी, केसेस भी. So it's a happy news. Thank you for giving me time to reflect on it. Thank you. I want to recommend that whenever next time you conduct a conference on a colorectal, you should also involve the general public. You should allocate a session for the general public for awareness. yes. It will create a good impact, and you can get the low-grade tumor as well. Thank you for the suggestion. डॉक्टर अजहर आलम, आप थोड़ा कमेंट करेंगे कि आपने बहुत अच्छा डेटा प्रेजेंट किया. पब्लिक सेक्टर में इतना ज़्यादा काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. तो ये जो MDT आप कहते हैं, मतलब मैं आपको एज ए जूनियर, मैं बात आप एज ए सीनियर बात कर रहा हूँ
कि वो MDT महीने में एक हो रही है। तो देखिए ज़्यादातर हमारा तजर्बा ये MDT डेवलपमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट का, और मेरे कोलीग्स मुझसे मेरी बात को वाउच करेंगे, वो ये होता है कि हमेशा ना आदमी किसी और की तरफ देख रहा होता है और वो कहते हैं यार वो आते ही नहीं MDT के अंदर, हम तो इंतजार करते रहे। MDT जो डेवलप होती है वो हमने कुछ साइड इफेक्ट MDT की उसमें 1.5-2 साल तक हमने रेडियोलॉजिस्ट का इंतजार किया कि वो आ जाए, सिर्फ हम खुद जाके डिस्कस कर लेते थे। तो पीयर रिव्यू आपका अगर स्ट्रांग है, जो लग रहा है आपने जो प्रेजेंट किया अभी, और ये हमारी बच्चियों ने, डॉक्टर हिना ने प्रेजेंट किया, पीयर रिव्यू आपका जब इतना स्ट्रांग है, इंट्रा डिपार्टमेंटल यानी इंट्रा डिसिप्लिनरी, तो आप लोग इतने स्ट्रांग हैं माशाल्लाह, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट करने में मसला क्या होता है कि हर डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन का इंतजार कर रहा होता है कि ये कब आएगा, और बाद में वो एंड में वो यही प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जी हमने कहा था वो आए नहीं, हम तो इंतजार करते रहे। आप अपने तौर पे शुरू कर दें बस 2 डिसिप्लिन। मैंने किए हैं ऐसे बहुत से बोर्ड जिसमें हम विदाउट पैथोलॉजी कहाँ से लेकर आएंगे, आप इतने कम है हमारे, वैसे शॉर्ट है। तो ये मेरा आपको रिक्वेस्ट होगी, बल्कि आप इसको जरा हाईलाइट करें। मैं ऐसे ही पूछता हूँ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, बिकॉज दीज कॉन्फ्रेंसेज आर फॉर कंट्रोवर्सीज, फॉर इंटेलेक्चुअल डिफरेंस ओपिनियन। ये कोई ट्यूटोरियल क्लासें नहीं हो रही हैं जैसे अब डॉक्टर अमजद ने प्रेजेंट किया है कंट्रोवर्शियल थिंग, दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो आप हर हफ्ते क्यों नहीं करते हैं बोर्ड, जरा आप मुझे इसका जवाब दें। सॉरी मुझे नहीं, मतलब जी सर, आई होप यू विल नॉट टेक इट पर्सनल। सर थैंक यू सो मच, इट हैज़ ग्रेट इनसाइट। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बात है कि हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं। जब हमने 2017 में सर शुरू किया तो देयर वाज नो MDT एट द इंस्टीट्यूट लेवल। माय मेंटर प्रोफेसर फारूक अफजल साहब ने स्टार्ट किया सबसे पहले, और हमने मतलब इसमें पर्सनल होके जो कम्युनिकेशन बैरियर थे उनको तोड़ा। जो ये चीज़ें थी कि जी उनको कहेंगे तो होगा, ये सारी चीज़ें हमने ओवरकम की और हमने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि चीज़ें पॉसिबल हैं। इवन देन बहुत सारी हर्डल्स होती हैं कि कम्युनिकेशन एरर्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, जी उसको कह दिया। तो हमने इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके MDTs की हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर देन कोविड आ गया इंस्टीट्यूट लेवल पे, उस तरह से फिजिकल पॉसिबल नहीं हुआ MDTs। देन हमने फिर उसको ऑनलाइन MDTs में कन्वर्ट किया। उसमें हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो भी अनमोल से ऑनलाइन भी और फिजिकल भी मैनी टाइम्स आते थे, और ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होना शुरू हो गई। लेकिन जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि हम उसको वीकली नहीं कर सके, दिस वाज हमारी डेफिशिएंसी थी। और ये जितना कि हमारे पास रेफरल है वहाँ पे और जितना पेशेंट का फ्लो है उतना हम उसको कर नहीं सके। ये हमारी मतलब कह लें कि वो डेफिशिएंसी रह गई। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप उसको प्लीज वीकली करें, उसको पब्लिश करें। Yes. आपको शायद एहसास भी नहीं है कि आपका डिनोमिनेटर बहुत स्ट्रांग है। Thank ये you, तो sir. मुश्किल से कहीं मिलेगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आप प्लीज इसको भी कर लें। डॉक्टर हिना से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, सब हमारे मेंटीज हैं तो कि हमारा टेफ बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बोर्ड्स इतने एस्टैब्लिश कर लिए जो सीनियर प्रोफेसर्स नहीं कर सके। जी सर, तो वी कैन हैव अ क्लैप फॉर देम, अगर आप बुरा ना माने तो टेफ के लिए। So, Dr. Nadeem, आप इसमें करें। थैंक यू वेरी मच। Dr. Nadeem, I have a comment and a question, suggestion for you. I am on. So, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि once we are practicing at a government hospital, तो जो हमारे provincial hospitals हैं और फेडरल हॉस्पिटल्स हैं वो एक पेज पे नहीं है। ये बहुत लंबी डिबेट है, आप भी इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी जी, मैंने पब्लिश भी किया है जी। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि देखिए हमारे जितने प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के, आप सबको, आपसे ज्यादा मेरे ख्याल में आई थिंक हार्डली एनीवन वुड नो अबाउट देम। सो नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल एट द प्रोविंशियल लेवल इन लाहौर, गुजरांवाला एंड ऑल दीज एडजॉइनिंग एरियाज, फैसलाबाद, सारे अस्पताल मिला के किसी एक के पास भी लिनेक नहीं है। ठीक है, अब जब लिनेक नहीं है तो वहां पे रेडिएशन का डिपार्टमेंट भी नहीं है। जिना में 1-2 सीट्स खाली हैं, वहां कोई पोस्टेड नहीं है। मेयो हॉस्पिटल के अंदर ओल्ड स्कूल वही सेम मशीन्स मौजूद हैं, 1-2 लोग पोस्टेड हैं एंड दे आर नॉट रियली वर्किंग। मेडिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट, आई वर्क इन अ 1600 बेडेड हॉस्पिटल, सो वी डू नॉट हैव अ सिंगल क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विद अस। So I know these are the problems. मुझे हमें प्रॉब्लम से आगे निकल के सॉल्यूशंस पे जाना है। But at the same time, things, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं अपने लेवल पे चेंज कर पाऊं, but things have to come from the top. So हम लोगों को इस कॉन्फ्रेंस को एक यूज करते हुए, एक टेम्पलेट बनाते हुए हायर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना है, एंड वी हैव टू अप्राइज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर एट वन सेंटर। ठीक है, आई नो मैं अपने केसेस किस तरह से करता हूं कि मैं
मैं आई मीन ऑफ कोर्स हम लोग मंथली एमटीटी करते होंगे, बट मैं हर केस को पर्सनल लेवल पे डिस्कस करता हूँ, उसके बगैर तो मैं मरीज को हाथ ही नहीं लगाता. सो दिस इज माई रूल ऑफ ट्रीटमेंट, बट अगेन दिस इज मी डूइंग इट. सो दिस हैज टू बी द इंस्टीट्यूट हु इज डूइंग इट. और वो किस तरह से होगा जब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी. तो हमें उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है, ताकि मैं हूं ना हूं मेरा होना रेलिवेंट नहीं है. अगेन सिस्टम का होना रेलिवेंट है. वैसे आप हो ना हो सकता है, गवर्नमेंट हो ना हो, भी चेंज होती रहती है. जी, वो तो ऑफ कोर्स यही है, बट ये है कि आई थिंक सिस्टम को बनाना चाहिए. उसके लिए आप सब Thank you very much. In the interest Sorry of to time, फिर हम interrupt. आपके साथ अभी खाने उस पे कर लेंगे इंशाल्लाह. Deadline is 3rd February, so we can conclude this Okay, debate. thank you so much. Thank you so much. We are short of time, so the panel of expert will now conclude this session. Thank you very much, participant, especially the Dilip. I know him when he passed the FCPS and joined the Jinnah Medical and Dental College. He was very good in their surgeries, and hope for him to do well further. Otherwise, the other participant was also very good, especially those came from the Peshawar. He presented a very interesting thing. Rubab presented a commonest presentation here, and I would say thank you for all. Thank you very much. Thank you, Dr. Sara. Of all, I request congratulate, panel of experts to the please stay on the COLOCON stage. Award. I congratulate the COLOCON award for conducting such a successful conference. Congratulations. We would request panel of experts to please stay on stage to receive their certificate of participation. We would like to call Professor Haris Rashid to come on stage and distribute certificate of participation among panelists and speakers of this session. कहाँ है Professor Haris Rashid? Professor Hussain Mehdi, sir, please move forward to receive your certificate. Professor S.M. Abbas, sir, please accept your certificate. Professor Abdullah Muttaki. And Professor Tavish Chawla, sir, please come forward. Now I would request the speakers to please come on the stage and receive your certificates. Dr. Riaz Ahmed, sir, please. Dr. Dilip and Dr. Rabia. Dr. Azhar for Dr. Awais. Dr. Abdul Rahman, sir, please. Dr. Rubab Nafees, ma'am, please move forward and receive your certificate. Dr. Hina Khan, ma'am, please. Azam Ali, third year resident, who has worked with Dr. Dilip.
Afira Bashir. Afira Bashir. Dr. Lashpat Rathore for presenting the surgical audit of colorectal ward. And now the moderator of this session, Dr. Sayyida Sara Kazmi. Thank you, Dr. Harris. We would like everyone to please stay seated for a few more minutes. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबज पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। Ladies and gentlemen, giving away prizes is a source of applause and appreciation, rectitude and fortitude. It keeps morale high, the morale which can be held like Himalayas, the thinking power that expands like sea. So, Colorectal Disease Patients Welfare Association and our organizing committee maintains such a tradition of giving prizes to those who participated in poster competition and scientific paper presentation today. Let's move towards the most awaited segment of the day. For this exciting segment, we would request Honorable Founder of Colorectal Disease Patient Welfare Association, Meritorious Professor Amjad Siraj Memon, to grace us his presence. Hold your breath. We are going to announce the winner of poster competition. So the gold medal and the first prize goes to Dr. Hina, poster number 6. Please give her a big hand applause. Second prize, silver medal, is awarded to Dr. Sobia Hassan, poster number 2. We are thankful to Mr. Mr. Majid Hussaini from Biophysics, Pakistan, for donating these gold medals for this occasion. Now the third position in poster competition goes to Dr. Saja Riaz, poster number 12. And a special appreciation on poster competition goes to Dr. Hania Makbul, poster number 8. Please come forward. And now for the best scientific paper presentation. And the gold medal for this goes to Dr. Dilip Kumar.
And now, all the poster participants, please come on stage to receive your certificates. Dr. Manur Hafiz. Dr. Naseem Ahmed. Dr. Aisha Rana. Dr. Tuba Umar. Dr. Kainat Mushtaba. Dr. Tairam Khalid. Dr. Sobia Hassan. Dr. Rubab Nafees. Dr. Samra Jabbar, Dr. Riaz Ahmed, Dr. Razia Ramzan, Dr. Bushra Kiran Naeem, Dr. Madhiya Siraj, Dr. Amna Khatun, Dr. Murk Lakhani, Dr. Sahrish Ali, Dr. Manur Sadiq, Dr. Muhammad Saad Arshad, Dr. Abdullah Khalid, Dr. M. Salim Sheikh. Mohammad Salim Sheikh. Dr. Hafiz Yahya Iftikhar. Dr. Hina Khalid. Mr. Izazullah. Mr. Ramesh Sumbul. Dr. Aman Faruqi. Dr. Noman Ahmed Khan. Dr. Sarosh Ahmed Siddiqui. Dr. Saja Riaz. All of them have worked very hard for this poster competition. Please give them a huge round of applause. Now I would like to thank our sponsors from pharmaceutical companies, Medtronic Company, Bosch Pharmaceuticals,
I'll call upon their representatives to please move forward and receive your certificates. First Medtronic and then Bosch Pharma. Sami Pharma. Representative from HiQ Pharmaceuticals. Ethicon. Biophysic Company. Representative of Royal Medical. AGP Pharma. Thank you everyone. And now, it's time to cheer for our helping hands for organizing this entire event, without whose constant efforts and dedication, this event would not have been possible. So first, Dr. Lajpat Rathore. It has taken months of constant efforts to make this possible for you. Dr. Lajpat Rathore, everyone. Dr. Komal Fahim. Dr. Bushra Javed. And the hostess of our today's program, Dr. Sabah Nazir. Dr. Ayman Farooqi, Dr. Aqeel Azmi, Dr. Sayyid Abdul Rahman, Dr. Teram Binte Khalid, Dr. Saja Riaz, Dr. Sumaya Hafiz. Dr. Maruk Akhtar. Dr. Yahya Iftikhar. Dr. Junaid Khan. Dr. Amber Ali. And our host for both days, Dr. Hussain Ahmed. Dr. Abir Khan.
Dr. Hussain. Dr. Hussain Ahmed and Dr. Maliha Shabir. Dr. Sara Anis. Mr. Shakir. Mohammad Zishan. And Mr. Kashif. And now, we would like to give special token of appreciation to 3 very important persons who executed this entire event. First, Dr. Rabia Ali. Please give her a big hand applaud. And now, Assistant Professor of Colorectal Surgical Unit, Dr. Hina Khan. Consultant General Surgeon, Dr. Rubab Nafees. Thank you so much everyone for putting up so many efforts. In the last, I would like to request Professor Amjad Siraj Memon to give some final remarks for this conference. Assalamu alaikum again. I think the attendance at this occasion, when the conference is about to end, tells you that it has been a successful conference, and I hope to God that inshallah next year again we will bring more knowledge and education and training in various ways to our faculty members nationally and internationally. एक छोटा खिलौना होता है जो हमारे ज़माने में अब तो शायद नहीं होता होगा, जिसमें चाबी देते थे, फिर उसके व्हील को पकड़ना होता था, वरना तो वो मूव करता रहेगा. फिर वो जब आप बहुत ज़्यादा चाबी भर देते थे, फिर आप उसको रखते थे तो बहुत ही तेज़ी से वो गाड़ी चलती थी और फिर वो कंट्रोल में नहीं आती थी. मेरे ख्याल में दिस अप्लाइज टू रबिया. रबिया उस खिलौने की तरह है जिसकी चाबी जो है वो भर के हमने छोड़ दी है और वो चाबी बंद होने का नाम नहीं ले रही. शी वॉज ऑलवेज एक्टिव एंड द अदर पर्सन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू मेंशन इज डॉक्टर मुजीब एंड डॉक्टर खुर्शीद. इनकी आपको नज़र पूरी कॉन्फ्रेंस में ये दोनों नज़र नहीं आए, हर जगह मुझे खड़ा कर दिया, मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं बहुत शुक्रिया. लेकिन इसके आप उतने ही हकदार हैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि आप अभी तक उस यूनिट को फरहान के साथ मिलके आप चला रहे हैं और माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल. आई कीप गेटिंग रिपोर्ट्स, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में मैं हूँ उधर रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, कुछ कान भरे जाते हैं, कुछ शिकायतें की जाती हैं, तो पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनसे ज़्यादा काम ना लें.
So I thank all of you, especially our pharmaceutical friends from the industry, from the suture divisions, from the endoscopy divisions, from the stapling devices वाला division, और especially बिलाल साहब जो है हमारे पूरे थिएटर के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं और इनको हमने जितना तंग किया है उसके लिए I really am very grateful. I would like Dr. Mujib to come over now and offer the vote of thanks. Thank you very much. We'll see you next year. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अमजद सिराज. अब वक्त हुआ है उस चीज़ का जिसका सबको इंतज़ार है. उससे पहले दो चीज़ें अनाउंस करना चाहूँगा. एक तो हम ये आइडिया क्वाइन कर रहे हैं कि कोलोरेक्टल सर्जन सोसाइटी होनी चाहिए जो इसको बड़े पैमाने पे ले जाए. विल बी कॉन्टेक्टिंग ऑल दोज सर्जन्स हु हैव रजिस्टर्ड विद देयर ईमेल्स ताकि उस पे हम क्वाइन करें और उस पे बैठ के डिस्कस करें. एंड लेट्स एस्टेब्लिश दैट वन. एक दूसरा, आप सब लोगों का आने का शुक्रिया और इतनी देर तक इंतज़ार करने का शुक्रिया. और आखिर में जो कहते हैं कि देगियाँ खुल गई हैं, खाना खुल गया, तो लेट्स हैव अ लंच प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. It's a time of departure. We are keeping tremendous and marvelous views from all of you.